हमारा पहले ख्याल ये था कि हम गुफ्तगू करें आइडियाज पे। आइडियाज वो मैंने जिक्र किया था साहब से कि आइडियाज पीटर वॉटसन की किताब है जो 1015 सफ़े पे है। ये पढ़ी हुई है, आप सिर्फ ग्लांस थ्रू करें, फ्लिप अप करें ताकि आपको कोई आइडिया थोड़ा सा हो जाए। कोई एडी नेड़े ले आओगे तो चुरलियां सारियां बैठा दूर रख लॉन्ग शॉट। आपको पता है नूरजहां जब थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो वो कभी गर्दन को बगैर दुपट्टे के नहीं आती थी, और हाथ पे भी, उसकी वजह हाथ पे भी सर जो वॉइस है यहाँ से सही नहीं है, जिस वजह से मैंने आगे मैं ऐसे यूं पाला नहीं तो सही आ रही है और परफेक्ट है। बहुत आगे नहीं आई है, लॉन्ग पे ना आगे नहीं है। तो वो आइडियाज मैंने बेटी को दिखाई है, एक दफा ग्लांस कर लेना जब आपको मौका मिले। आइडियाज ये किताब नहीं है जिसको ऐसे पढ़ा जाए जैसे कोई नावल पढ़ा जाए। You have to read it slowly and absorb it. Right? For example, one of the first ideas, मैंने आइडियाज की बात नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वो मैंने किया था कि मेरी ख्वाहिश है और दरख्वास्त है कि आप ये किताब खरीदें, 1 साल लेके पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं, और बशर्ते जिंदगी मैं वापस आऊंगा एंड आई डिस्कस इट एंड आई सी हाउ मच यू रिमेंबर एंड हाउ मच आई रिमेंबर। One of the first ideas that has came along was the discovery of fire. Because fire का और पकाना तो शायद बाद में शुरू किया, एक ये फायदा हुआ कि अंधेरे का खौफ खत्म हो गया। You got light. दूसरा फायदा ये हुआ, you read it in this, कि आपने खाना सेंकना शुरू कर दिया तो उसके जरासीम जो गोश्त में आ जाते हैं वो मरने शुरू हो गए, and we probably absorbed more protein. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि there is a clear division between religion and scientists. All religions, particularly Judaism, Christianity, and Islam, say that the sapien, Homo sapien, insan, was created by God Almighty, Allah Almighty Himself, and then said to His angels, bow down to Him, and all did except Iblis. Right? And so Iblis taunted and said, okay, you created him out of mud. Now see मैं इसको वर्गलाऊंगा कैसे। बल्कि अनवर सजाद साहब, डॉक्टर अनवर सजाद मेरे बेतकल्लुफ दोस्त थे, उन्हें एक दफा मुझे दफ्तर आए, लाहौर वाले दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि इब्लीस ने जब ये कहा कि मैं नहीं झुकना, वो भी हुक्म इलाही फॉलो कर रहा था। You needed a protagonist to test human beings because we have been theoretically given free will. And we'll come to will as we move forward. Whether it is free or not, bada debatable. What is free is also debatable. So we'll not talk about this, we'll talk. Idea by itself is a noun, as
opposed to a verb or an adjective or a pronoun. We're not getting into articles because it refers to a person, place or thing. Any sort of an idea. It's from Adam. इसका adjective idea का is also a noun. Sweet is the adjective. Red, it's also an adjective. इसका pronoun भी है. Word you use instead of a noun. वो क्या बताता है? That is already known. I, thou, thee, tree. That's a pronoun, not a noun. Verb is always used to describe a thing. To hear, verb. To become, happen, or to happen. So you please keep these little differences. आना मौलाना रूहानियत लेके आयो हाँ लेके आओ ना बैठो ना. Alright. So आपने the concept or the meaning of idea ज़हन में रखना as we move forward to stretch my mind and to stretch your minds. Please bear in ये याद रखना. I have come to learn because you are young, you are computer oriented. I am not. Television came to our house in 1964. It started out as black and white. So I have no concept of computers now. But let's go forward. Why I say that I have come to learn, and hopefully you will learn it. Because it is possible to learn, it is almost impossible to unlearn. याद रखना. ये गुत्ती क्या नहीं थी? गुत्ती कही था कि गुत्ती कही था? गुत्ती की ये चीज़ां बैठ जान वो निकल दिया नहीं. बिल्कुल नहीं निकल दी. Alright. Conversation, we hope you are having a conversation, is an informal exchange. यदि कोई मोतबरी शामिल नहीं, मनु मास्टर ना समझना. Please don't look upon me as a communicator. It is up to you to. जो लफ्ज़ इंटरनेट पे भाई ने भेजे मुझे, उनमें था लफ्ज़ हैबिट, आदत, इमोशन, जज्बात और एहसासात, फीलिंग्स एंड ए वेरी ट्रिकी वर्ड, कैरेक्टर. कहने बंदा बहुत है पर कैरेक्टर खराब है. So we've got to understand. We have to Let me share something with you. This is not in part of it. We are mammals. Mammal is a warm-blooded animal. As opposed to snakes and other creatures, they are cold-blooded. Among all the mammals, we are the only mammal capable of full-throated laughter. ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਪੋਪੋਟਾਮਸ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਚੀਤਾ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਦੇਖਿਆ? We are the only ones. Let me add one more thing. ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਓ. When we smile, this conveys non-aggression. But we use the same set of muscles in smiling and ghurang. Ghurane mein वही muscle इस्तेमाल हो रहे हैं. One radiates aggression, one radiates gentleness. मैं कुछ नहीं कहूँगा.
मैं बड़ा गाने किड्डा आसान होंदा कि शेर हसदा आंदा ते फिर तुहानूं खा जांदा नहीं वो शेर की एक वीडियो है 8 फरवरी तो बाद हंस ही दिया होना चाहिए Okay, before I go further on the notes that I've made, जो आपको मिल जाएंगे, I must share with you a difference between films and television. Because you recognize, mostly because of television. फिल्म हम देखते हैं एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में. स्क्रीन होती है दूर और ऊंची. तो जो लोग उस स्क्रीन पे नमूदार होते हैं, आप उन्हें कहते हैं स्टार्स, फिल्मी सितारे. वो कौन जा रही थी? नदीम जा रहे थे. वो जी दिलीप कुमार फौत हो गया. अच्छा जवानी से फौत हो गया, 100 साल की उम्र तो नहीं ना. Television is an immediate medium. ये आप बेडरूम्स में देखते हैं at a distance of 5 feet to 7 feet. Unless you're a big screen, you have to go back. टेलीविजन पे जो लोग आते हैं उनको आप स्टार्स नहीं कहते हैं, उनको आप आर्टिस्ट कहते हैं. यहाँ जो आ बेटा आजा आजा आजा, और जो बात बात अपनी बूथी बनाए उनको आप सेलिब्रिटीज कहते हैं. फर्क दूसरा ये है कि जो लोग टेलीविजन पे आते हैं, वी बिकम फेमिलियर विद देम as if we know them. That's the difference. यानी मुझे कई दफा एयरपोर्ट पे ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो सिर्फ मुनकिर नकीर को या मनकुआ बीवी को पूछते थे. सर ये लफ्ज मनकूहा बीवी क्या मतलब होता है? निकाह जिम्मे लगा मतलब बीवी निकाह के बगैर मनकूहा बीवी केड़ी होंदी है? वो मुता देंदा है, लेकिन वो सिर्फ ईरान ही होंदा है और शिया भी कर लेंदे ने. मैं वो भी तो कायम होता है. What I want you to remember is that both films and televisions, उनका बेसिस है लाइट्स, कैमरा एंगल, मेकअप एंड एडिटिंग. So there is a certain falsehood in that medium. So there is no need to be overawed either with film stars. वो मेरा यार है अरशद महमूद, वो एक मीरा नाल एक फिल्म कर रहा सी, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਮੀਰਾ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀ ਸੀ और कहना सी कल रात को मैं एक बहुत बुरा ख्वाब आया. वाह अब आजा, कल रात को मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया. डायरेक्टर कहता है वाह नहीं ख्वाब क्या है. अरशद महमूद बड़ा खुश कि जब क्या पै रही फिर अब आजा, रात को एक बहुत बुरा ख्वाब आया. उन्हें कहा शाम दे रहन दो. तो अरशद ने कहा कोई गल नहीं, असी पंजाबी हाँ, असी इतने वाय नहीं बाव नहीं होंदा, ਉਹਦੀ ਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲ ਕਬਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ. ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਬਾਬ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬਾਬ ਲੈ ਭਾਈ 2 ਕਬਾਬ ਲੈ. What is a habit? A habit is something which a person does often and repeatedly.
कोई दिक्कत नहीं, आदत में कोई दिक्कत नहीं। मसलन कई लोगों को पब्लिक में नाक खोतरने की आदत है। भाई कल्याण गांधी बहुत साल पहले कि 73-74 की बात है, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा था तो मेरे सामने वाली जगह में बैठे एक बंदा चारों उंगलियों से नाक मैं उन्हें देख रही हूँ, वो कभी चीची पा मेरे को ना रह गया। मैं क्या सर मेरे को भी आप जेडे तुसी हीरे काट रहे हो मेरी उंगलियां सवाल करके एक कदा हीरा मन भी दे रहा। कैमरा में बड़ा लगा चाहिए क्या के लिए? क्योंकि वो खड़े नहीं मैं ऊपर गल नहीं करनी छाती के आएगी ना लोग कह रहे हैं कि आइंदा खड़े ना हो। मेरी लता फाड़ लेगा या मेरी बंद है मैं हट गया बट किसी ने भी हिम्मत करनी है नहीं। Before I get into habit, emotions, and feelings, and character, I want you to understand the word instinct, jibillat. We are born with jibillat of a certain kind. Okay, before I go further, मैं पेंसिल कागज जाके इसको लिख लो तो ये हो जाएगा। मैं घर बैठ के करना चाहता हूँ। There are too many books. Information is so vast that no one person can absorb it all. What is our life? No holy book tells you when Kun Fayakunu was done or said. Be and it is. यही है ना इसके बिग बैंग कहते हैं, not really. But scientists tell us that the Big Bang occurred 13.7 billion years ago. तो जब रिचर्ड डॉकिंस ने किताब लिखी द ब्लाइंड वॉच मेकर, तो मैंने उसकी साइट पे लिखा नहीं द स्लो वॉच मेकर। ये जो इमोशन है एवोल्यूशन का, इसे इर्तिका है, इसमें इर्तिका। मुसलमान स्कॉलर्स रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनका ख्याल है कि इर्तिका भी हुक्म रब्बी से होता है। Scientists don't believe in this. Listen, evolution has its own process. There are no laws really about it. Now, to understand who you are as sapiens, as humans, I am going to recommend three books to you. The first book is called Sapiens by Hariri. दूसरी दस भाई मुंह करके बोलो अगली दूसरी दस पैड़ा और झूठिया एवं दंद मार रहे हैं। Homodeus, Homodeus, actually, which translated means man God. The desire of man to become like God. And his third book is 21 questions for the 21st century. अब पढ़ने अभी सीक्वेंस चाहिए। You must first absorb sapiens. तानु एहसास होएगा कि इंसान ने कितना जुल्म किया, जानवरां दे भी ते बाकियां दे भी। जिस दिन ते जुल्म कर सकता सी, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे। The fourth book I recommend is An Intimate History of Humanity.
इसका ऑथर इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका ऑथर है थियोडोर जेल्डिन, थियोडोर THEODRE, थियोडोर जेल्डिन. The two other books that must be read is Margaret Mitchell's Gone with the Wind. Slow book, but you will understand USA. And you must read The Count of Monte Cristo, the greatest storybook ever written. Victor Hugo की. बोले बोले पढ़नी है. अरे पूरी पूरी. The Count of Monte Cristo. MONT. की है हीरो की नाम है? उसका नाम था नहीं लपड़ पाना चाहिए. नहीं सर, इवन उसका वो जो सीन है केव वाला, हाँ वो ना वो प्रिजन ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਦਾ ਹੈ ਚਲ ਜਾਂਦਾ. All right, let's go back to the word instinct. Jibillat. What is the first instinct that we have? देखो जी मेरी बेटियों, अगर तुम्हारे ख्याल है और बेटा तुम्हारे ख्याल जितने बेटे बैठे हैं तुम्हारे ख्याल है कि तुम एनका ला के बैठे तो मैं समझेगा तुम बड़े पढ़े लिखे हो तो ये ख्याल दिल से निकाल दे तो जल्दी करके बाय फेंके से एनके से ये बताते हैं. अच्छा तुम नेचुरल नहीं हो. ऑल राइट बड़ा सख्त. The first is fear. Fear. Preservation. We'll come to खौफ. और ये सिर्फ हमें नहीं है, बहुत से मैमल्स में. Such thing as fear. हम इससे काम बहुत लेते हैं. जी हमारी बीवियां भी लेती हैं. But we'll come back to खौफ a little later. Let me go to the next. Hunger. भूख. कुछ का when we come back to it के hunger में क्या करना. The third instinct is sleep. It's an instinct. और ये मैं 637 घंटे जिंदा रहा हूँ, मैं सोता ही नहीं हूँ, मरिया क्यों नहीं करना. Why did you pop off? एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टिंक्ट है हमारे में, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस. वो बांधने भी आ गए यार. बेटे बांदर इतने बड़े नहीं होते. मैं बड़े बड़े मोतबर बांदर देखे. एक और हमारा इंस्टिंक्ट है इमेजिनेशन. मैं इसकी प्रॉब्लम बताऊंगा, इमेजिनेशन की प्रॉब्लम क्या होती है. एक और हमारा इंस्टिंक्ट है डिजायर्स, ख्वाहिश. हमदे शेर है. ये जो ख्वाहिशों का परिंद है, इसे मौसमों से गरज नहीं. ये उड़ेगा अपनी ही आंग में. इसे आप दे के शराब दे, मिराज दिखाओ या पानी दो, मैं वो कह दिया वो चाहिए. और कोई बताए इंस्टिंक्ट हमारा. मैंने लिखा एनीमोर. सोच के ठोडी के हाथ रख के नहीं. साढ़े अपने गल सुनाई थी, लॉ कॉलेज पढ़ते थे, यासन बटाली सर मानते तो एक क्लास ही मुंडा आंदा 3 किताबें इतने रखी हुई, 3 किताबें इतने उन्हें खिलाया. फिर कहने बगला ही तो तेल नहीं हासिल पैने है पढ़ भी तो सही है. I wish you could get on. You know, it would be so easy if ilm, knowledge, could be purchased and put in your ear. हर करोड़पति आदमी 3-3 करोड़ रुपए का इल्म खरीद के अपने पुत्र के कान में या नाक के यहाँ भी डाल सकता है. वो डालने का पुत्र बड़ा लायक है. 3 करोड़ रुपया लग गया. Knowledge has to be gained
block by block by block. There is no such thing. Now, what are the habits that these instincts create in us? Let's start with fear. Khawf. Yes, my beauty. Fear. All right, let's put it another way. Look, unless you help me and you teach me, मैं जो अपना मगज पैड़ियां गल्लां लैके आए हैं ना, वो ही ले जाएंगे ना. You have to plant and what do you fear most in life? Your parents' death and they say ठीक ठाक है. तारी माँ का मन पता नहीं. You know, बहन, laughter is not the best medicine. It is the only medicine. याद रखिए. हाँ जी, खौफ दसो. अंधेरे का खौफ आंदा था. अंधेरे का? हाँ, नहीं, डॉक्टर. हाइट का. हाइट. ओके, पहला वर्टिगो हो जाता है. एक जेम्स स्टुअर्ट की फिल्म है ये, वर्टिगो. अल्फ्रेड हिचकॉक ने बनाई है. You should go up and look up vertigo. और जी, हाइट्स का. जी मौलाना प्याली वाले. काटा खाली दाई के उड़ा मिल जाएंगे तो याद दुनिया की. हाँ जी, किस चीज का खौफ है आपको? Fear to unrecognized, यानी no relationship. नहीं, यहाँ तो अंग्रेजी बहुत आती है, यहाँ तो नहीं आती. दोनों काम ठीक है क्योंकि उन्होंने दी जबान है वो पैसे चले गए. अभी हमें अंग्रेजी में टेस्ट करने लग गए. ताल्लुक ना हो, कोई क्या ना ताल्लुक ना हो. You do you regret your fear not having a relationship? कुड़ी नाल के मुंडे नाल. सर थोड़े कम से कम 20-25 क्लिप बढ़ सकते हैं लाइव गुफ्तगू तो. जो मर्जी बना लो, मेरे वाले 125 बना लो. मैं बड़ी देखनी. Incidentally, I don't watch myself on television. I call it narcissism. मैं अपने आप में भी समा ते बूथी अपनी उठे भी देख. दो काम नहीं हो सकते भाई. एक टाइम से कोई काम हो सकता. फियर के साथ अभी आपने सिर्फ दो ही बताए. अभी आपने खौफ नहीं बताया, बट लेकिन मैं आपको ये बता. लेट मी शेयर समथिंग. आपका ख्याल है कि जो फौजी है या जो एयरफोर्स का पायलट है उसे फियर नहीं होता? What does he do? He has learned to conquer it with his skill. Do you know कि ये तो F-104 था. उसको लैंड करते वक्त जो अमेरिकन जहाज था पुराना, you had to be so precise. Not more than 1.5 inches का आपको लैंडिंग के वक्त टारगेट था. करोगे ट्रेंड हो जाए. So one of the ways of conquering fear is skill. वकील साहब बैठे हुए यहाँ. आपके ख्याल में कि 5 भैड़े मुंह वाले जज बैठे हों, तेरा वकील जो उठता कुर्सी तो उन्होंने घबराहट नहीं होती. But the moment you stand on the rostrum, the skill must take over. आपके ख्याल में जो ओपनिंग बैट्समैन जाता है बैटिंग करने और आगे बेल्सली हॉल कर रहा हो या चार्ली ग्रिफिथ कर रहा हो तो उसका दिल नहीं धड़का. लेकिन जब वो स्टांस लेता है, the skill must take over. And yet there are fears. There is a fear of the unknown. Fear of what will happen. And हमें apprehensions बड़ी होती है. इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं. कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. थोड़े मुंह तेरा और कार या ना कार ये गाने का मिसरा. इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़. Do or don't do. Get on with it. In life,
Do not be indecisive. Better to make a wrong decision than no decision. ठीक है क्या? और एप्रीहेंशन, मेरी फूफी की धी नाल ना ब्याह हो जाए, वो ते दो दंद नहीं है समझे, अच्छा भाई ना करें ना, say learn to say no, लेकिन the key of saying no कि दिल नहीं तोड़ना. One of the most difficult things in life is to say no. मैं खड़ा हो जाऊंगी. Sorry. मैंने हासा बड़ा आंदा ही मैं उठा नहीं दूँ. अच्छा मैं बेस्ट पे हूँ. अच्छा ये सिखाएं कैसे कि दिल तोड़े बगैर ना कैसे करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. Gently. ये आपका सही है वैसे. नहीं सीखना पड़ता. कैसे सीखा? मैंने अधेरी प्लान दुखी मांगा, ऐसी जरूरत नहीं भाई. मैं एक दफा लेबर लॉस पढ़ाया करता था, तो मैंने एक मोतबर से बंदा था. मैं क्या, जब आप जाते हैं किसी क्लार्क के दफ्तर में किसी, तो वो क्या करता है? कहना उठ खड़ा है. फिर हम बात, मैं क्या, अगर वो आपके दफ्तर में आए तो आप क्यों नहीं उठते? कहता मैं उठा तो वो चौड़ा हो जाएगा. फिर निकलते. यानी ये जो फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी है, इसका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं. ठीक. इट्स इन अस. आई नो ऑफ ए सर्टेन लॉयर जो जब हाई कोर्ट में जाता है तो छतरी कोई और पकड़ता है. भाई यहां तो तेरिया बहन हो, देख तो मैं मानना कि तू दंदा ही फाड़ के नहीं जाएगा. जो नया बच्चा पैदा होता है, प्लीज बेयर इन माइंड दैट द चाइल्ड इज इन द माइंड्स वूम्ब व्हिच इज फुल ऑफ वाटर. So he rocks. He knows only two fears. Fear of falling and fear of loud noises. If you, newborn baby, if you put your little finger in his fist or her fist, you will find that she'll grab it. Hold it. Well, one scientist says she can hold her own weight. इतनी strong grip होती है उसकी. Instinct, but loud noises bother her. But all other fears we put in them. होने रह गई, उठे बाबा आ गई. हाँ, जिन बाबा हो गया करना. देखो मैं बेटे मैं मास्टर को पांड नहीं. Okay. We are born to parents and we inherit a genetic code. साढ़े रंग साढ़े उंगल साड़ी अखा का रंग की होगा. असी गंजे होंगे कि नहीं भाई जान में तंग ताकि रिश्ता लैन जाओ ना कभी भी तो पहले मुंडा या कुड़ी का मामा ले आना. That is inheritable. क्या बात कर रहे थे? Fear. Instinct of fear. Therefore, fear होता है. The key is to able to control it. आप घर में गोलियां चल रही हैं तो बंदा कहना मेरा सिग्नल मार, और नहीं भाई नहीं. He knows how to avoid it. You know, but he has also chosen for himself a profession where death is more possible. Don't choose it, भाई. किसने कहा फौज में जाओ?
You made a choice. And we come to choices again. यानी आप लोगों का यहां बैठने से चॉइस, हम फैसला किया बैठने का, कौन रोक सकता कि आप उठ के चले? मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगा. मैं कहूँगा मास्टर साहब ने मैं गल्ला करता रहा और हम दसांगे सब तो अच्छी भी कितों मिलती. All right. The next instinct is hunger. We can't get out of it. So choice is ours. Wolf करो आराम वाल खाना. Now modern science says chew it. Mastication जो मज्जम करती. The more you chew it, the easier it is to digest. और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी भूख है उससे कम खाओ. कीप लगी. और वजन कम करने का तरीका शुगर को मोटा नहीं रहता. मैं काम नहीं देख रहा, मैं ग्लास काट रहा तो कुर्सी वाला आप है ये स्लाइटली ओवर. कोशिश की थी हाथ रख के छुपाओ लेकिन नहीं टेढ़ कितना जो पता. We must learn. वेट लूज करने का तरीका कई है डाइट्स में, ये भी है. बट इफ यू आपके साथ पढ़ा था एक्सरसाइज, आपने फीस 12 लाख रुपए कर दी वहां. मैं तो नहीं उसमें, आई एम नो लॉन्गर. उस वक्त आप जब थे उसकी बात कर. अच्छा यार पहाड़ों पे चलें, मेरे साथ फ्री है. बिल्कुल पैदल जाओ. ज्यादा लेपर्ड ही खा जाएगा ना, उन्होंने हजम होगा ना, गोश्त ज्यादा है वो कुछ बच्चे वास्ते भी ले जाएगा. आपके मैंने कुर्बानी दी है हैवानात के लिए. So the key of losing weight is to eat in small portions 4 times. Okay. Wait 4 hours, 5 hours, फिर खाओ. And drink a lot of water. Where we live in a hot country, we should start the morning with water. मैं डिपेडी भी कुछ आपकी बातों पर कितना असर है. मैं परेशान और पशेमान हो गया. दोनों चीज ऐसे. कॉफी गर्म हो सकती है अगर किसी पास गर्म उंगल के पा दे. अरे बाबा मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, आप हंस रही हैं. हंसने पे कोई पाबंदी नहीं मतलब आप वो बेटी कौन सी गई, बेटी कौन सी गई, कहाँ बैठी? आप अगर स्लीप हमारी जिबल्लत का हिस्सा है तो लोगों कई हैं जिनको नींद नहीं आती. इंसोम्निया है, क्या बन गए? उनमें नींद नहीं इंसोम्निया. अच्छा जी मैं करना मैं देना मैं आगे गया था. तू जो सांस करना तो साह लिया कर ला 35वें साथ शैतान आके तुम सुना देगा. गोली की जरूरत ही कोई नहीं. शैतान गोली देगा. मैं आई यूज्ड टू लिसन कुछ ना वो जो डेली थोड़ी सी ना ऐसी लगा देता हूँ. हाँ वो भी स्वाद नहीं है. 5 से 10 मिनट नहीं होता. ना बिल्कुल स्वाद है तो हो आ जाएंगे. अच्छा उतनी शैतान जल्दी आएगी. मैं तो पूछ रहा हूँ भाई बेटी. जो असल सोना है उसे रेम कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट. दैट्स ए डीप स्लीप. Yes.
That's very good. We have also seemed to have lost the art of dreaming. और ख्वाबों के बारे में बड़ी मुरादी ख्वाब आई, मैं जा रहा हूँ, मुझे जो ख्वाबें आ रही हैं पिछले 10-12 साल से, इतनी दाढ़ी वाले बंदे आए थे, सानू पता तो की कीता है, सानू गलती लग रही है मेरे बड़े भरा से, तुसी डायरी फिर तो चेक कर लो, सी मुल्तान साहब। So sleeping, we must sleep often. आपको पता है, even today in all the Arab states, or even in wherever they in Spain also, they have a siesta. रोटी खाते हैं तो समझ लेते 3 घंटे वास्ते, और हम भी सोते थे। और वो हम life now has become so complicated that दोपहर की नींद है। So we must have 7 hours of sleep if we want. आपने थोड़ा सा जिक्र किया, is dreaming an art? How? Some say that it is. Others say it is the jumbling up of neurons, mental cells. It's just a jumbling up. Some say no. If you are a person with intuition, you can also dream about things about to happen. उसे ESP भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। यानी एक्सपेरिमेंट हुई है कि 2 बंदे जिन्होंने ESP, दे आर कनेक्टेड मेंटली, उस कमरे में बिठा दे, उन्हें उस कमरे में बिठा दे, उनको तू ही ड्राइंग कर, उनको तू ही ड्राइंग कर, they make almost the same kind of drawings. Right? Now, ESP is like when a thought moves in your mind, the thoughts move here. गुर्दे च नहीं होंदियां, they all move here. ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ overstate ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. दिल is a pump. Puck, 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 puck. Systolic and diastolic. One is arterial, जो ऑक्सीजन लेके आता है. The other is venous, which is so. But we have in the Orient, हमने दिल को बहुत बड़ा मुकाम दे दिया. वो ऐसे गुजरी, मेरा दिल ही बैठ गया. शामी जी ने पंप कर वो ही बह गया, तो तू फौत क्यों नहीं आ गया? वो बैठ ही गया. The other thing among instinct is imagination. We can imagine things. Our human beings' problem is, among many others, that what we imagine, we start to believe it. Actually start to believe it. So you have to be careful with what you imagine, because moving, and we let me point another thing to you. जो बच्चा पैदा होता है, वो पैदा होते सुन तो सकता है, और उसको नसर नहीं आती, वो रोता म्यूजिक में है. ABCD करके नहीं होता, वो सत्तो जोर लांदा, जिन्नी जोर दी चूंडी बैठो वो नहीं नींद तक पहुंच जाता. How do we see? Photons, light, which is sometimes a ray, but also a wave. They come and hit us here, your receptor. It puts an inverted picture. पीछे nerve है, the image is made up by the mind. भाई मैं तो कई ट्रक देखे ना, मैं कि यार साड़ी दूर दी फूफी वर्गा मूह रही है. मैं लोटा भी देखा यार, उसकी शक्ल नहीं मिलती. Because the mind always correlates it to what it knows.
So we see images in clouds. वो तो नाक नहीं होता बड़ा वो सूरज वो चंगा बड़ा बरसन में वो नाक चढ़े और let's go. Desires, ख्वाहिश, ये instinct है. There's no running away from it. And I'll come to कि ख्वाहिशों को कब्जे काबू में रखने के क्या तरीके ख्वाहिशें जरूर यानी मैं इतना घटिया और कमीना हूं स्मॉल क्रॉकरी छोटा पांडा एक बहुत अमीर आदमी मुझे मिला और मेरा हाथ पकड़ के अपनी रोल्स रॉयस के पास ले गया मैं उससे बातें करता रहा ऐसे जैसे मैं रोल्स रॉयस देखी नहीं आई डिड नॉट गिव हिम द प्लेजर मेरी कम्युनिटी मेरी कम जरफी स्मॉल क्रॉकरी 3 दिन बाद में अल्फ्लाइज पार्क देखी अल्फ्ला बिल्डिंग उधर ड्राइवर बैठा और मैं कहा बाहर निकल मैं देखना चाहूंगा सो आई सैट इन दैट कार आई स्मेल्ट इट मैंने उसका स्टेयरिंग देखा मैंने देखा बट उसको मैंने नहीं खुशी देखने दी कि मैं तेरी गड्डी देख लेती है क्योंकि कमीना भी होना चाहिए स्मॉल क्रॉकरी ना ये जो ख्वाहिशें हैं इसमें उनको जकड़ा नहीं गया हुआ ये चेन से बंधी हुई जैसे आप कैदी आते हैं उनको जेल में यहाँ कैद में नो आर यू विद मी मौलाना हुबरा वाले I come to desires again because it is nice, it is a natural desire to look at females. It's a natural desire. They know, लेकिन ऐसी कूदते रहने मैं एक बंदे ने क्या किसी जनानिया ने कूदना कि कूदना कि बंदे ने पूछा कहना you don't know our ancestors are from Turkey therefore we are very Turkey उन समझ आया जी ताकू कूदन का मतलब समझ आया एक दफा ये शुरू कर ले फिर ठंडी हो जाएगी ब्रेक देते थोड़ा सा प्लीज कॉफी लेते मैं की करूँगा मेरे खिलाफ से बंदा कहते मेरी जुबान साथ ना डिजायर्स को ख्वाहिशात को जो फजूल भी हो सकती है इसको चेक करने के लिए 2 असूल हैं एक है मैन मेड लॉज वही उसकी साइकिल चोरी नहीं करनी गाड़ी नहीं चोरी करनी गाड़ी चोरी करनी वो जनानी बड़ी सोनी काश मेरी हो जाती भाई नहीं हो सकती बहुत दिन So there is divine laws and there are man-made laws to check desires. You can't let desires out. किस तरह भाई हाँ अगर आप जंगल में हो तो जेड़े मर्जी तो हम बांदर खा जाए जैसे कुछ नहीं खाएंगे ना तो हम कुछ खाएंगे but when you live in society in a social setup and we are said to be that we are social animals. We have to live within certain rules. Some of them may be stupid. यानी मैं समझता हूँ कि ये जो सफेद बुरखा बनाते हैं शटलकॉक बुरखा वो जनानी छोटी छोटी मोहरियां होंगी हैं उन्होंने गटर नजर ही नहीं आ सकता शायद ख्वाहिश यही हो कि गटर गटर में गिर जाए लेकिन और भी तरीके हैं मारने के गटर के सिवा We must learn how to understand death. The first rule is
it is inevitable. एक ही तरीका बचने का, पैदा ही ना हो। यानी अगर मुझे पूछा जाता कि तू पैदा होना है कि नहीं, मैं थले गया पाकिस्तान में, मैं कहता नहीं सर, मैं उतने ही फटफड़ाता। बट वी आर नॉट आस्क्ड ना। ये भी याद रखना, जो मैंने जेनेटिक्स की बात की थी, इससे मैं एक बात भूल गया था। Whereas we may inherit the nails and the shape of our nose, which we can change. कोई ऐसी बात नहीं. You can always change many things. We can inherit blood types. We do not inherit characteristics. नहीं तो आइंस्टाइन का पुत्र आइंस्टाइन होंदा, अफलातून का पुत्र अफलातून का प्यो होंदा, सॉक्रेटिस का पुत्र उस तो बड़ा होंदा। We don't. You have to do it yourself. एक घर में बच्चे पैदा होते हैं। मेरी एक बेटी, मेरी बहन मर गई, 5 बहन भाई थे। We are all different. In temperament, in attitudes, in approaches. ठीक हो गया जी? Let's go forward. दो तरीके आपने कहे थे कि उसको Cope with death. ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के 2 तरीके। एक तरह के तो हम लित्र पहन एक मैन था, एक डिवाइन और नहीं, हम देखो ना क्या what is that? बहुत ज्यादा टेंडिंग हूँ तो मुझे लगा कि नहीं, no need to be, I'm just joking. Thinking about sort of social system that we live in. कि अगर तुसी कुड़ी ताड़ो, तुझा भरा वड्डा होवे, तू लपड़ मार वो सिख सी ना, तो उन्हें एक दूसरे ने कहा कि मैं कसुन मार के तेरे 40 दंद तान देंगा। दूसरे ने कहा मुंह तो 32 नहीं, कहता 8 तेरे पर मैं। क्या भाई? आप ताड़े, अगर आप रिश्ता लेके जाए अपना, और वो समझे वो लोग कि आप इस काबिल हैं कि उनकी बेटी खुश रह सकती है। द की इज हैप्पीनेस। मैं भी आता हूँ हैप्पीनेस पे, विच इज रियली माय मेन सब्जेक्ट। तो ना सिर्फ आपको रिश्ता देंगे, पांडे भी देंगे, वो थोड़ा सा सामान भी देंगे, वो आपकी रोटी शोटी भी पकाएगी और खिदमत भी करेंगी, और आपको जान जी भी खेगी पहले 6 महीने, फिर उनको पता लगेगा। ये उससे अगली फेज में है। 6 माह की बात है, बड़ा अच्छा समझते हैं बाद में क्या। एक मैं आपको क्यूरियोसिटी का बात, लफ्ज लिखा हुआ तो मुझे याद आ गया। क्यूरियोसिटी से इंसानी तरक्की इज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। ठीक है, हमारे में मेजर डिफरेंस हैवानात में 3 है। रूह, अगर आप किस दिन आएंगे तो वी कैन टॉक अबाउट द सोल ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। One is development of language. We know monkeys have calls. Cheetah है, take और call. चील आई, take और call. ठीक। We also know कि हिरन जो हैं, जब वो स्पॉट कर लेते हैं लेपर्ड को या टाइगर को, we also know that whales, remember, whales की fins नहीं है, like other fish, वो इधर से पाएंगे। Therefore, the scientists say they were once land animals. They have not been able to develop the ability to take oxygen out of water, which ordinary fish have. They also make grunts, which can be heard. 1, we have developed language. 2, we have
known printing. हम छाप लेते हैं। वो जी रस्तू ने की क्या सी कहा अल्लाह फाड़, अफलातू ने की रिपब्लिक पढ़ लो। ठीक है, सुकरातू ने की क्या सी, कोई चीज नहीं बची, लेकिन प्लेटो ने लिखे हुआ है, अफलातू ने लिखे हैं सोक्रेटिक डायलॉग्स। सुकरातू की कोई चीज नहीं बची। राइट, सो वी हैव प्रिंटिंग, we have language, and we have become social creatures. So we communicate with each other. And human beings have the ability, only human beings, to communicate with strangers. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੰਢ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, हेवन हाथ नहीं करता। वुल्व्स अपने क्राउड में बार वाला बंदा नहीं आने देते, मंकीज नहीं आने देते, माउंटेन गोरिल्ला नहीं आने देते, एप्स जो हमसे नियरेस्ट है वो नहीं आने देते। एप नु हंसने देखा कहीं से? यस, दिस इज द नियरेस्ट दैट एन एप गोज टू स्माइलिंग. Nobody else does it. We do. And we don't smile enough. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲੂ, हमने देखे अब जरा जजो बंदे हूँ। फिर ये मसला क्यों है? वो प्याया तू बाठा का हो जाना, साढ़े में तू पिंडियां खरीद रहा होना, वो कातों से बाहर ना होना। इसी में लफ्ज कॉइन किया हुआ औकात शरीफ। औकात मैं साहब को बता रहा था, मैं 15 दिन 20 दिन पहले चीफ जस्टिस को पेश है, उन्होंने वो तकरीर तक ले आया। द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन मैनिपुलेटेड. It has allowed itself to be manipulated. I shall not allow it to be manipulated. मैं कहा, you, my lord, should better hurry. You are running out of time. Let's go forward. जो मैं आगे करना. Now, Christians, Yehudi and Muslims, we have a one-shot exercise of life. Come, death, and then starts from a belief another life. And then our belief is that on the day of judgment we will all be raised up. कई मौलवियों ने लिखकर मैं थोड़े वाल नहीं देख रहा. The Hindus have a different concept. It's rebirth. जो आपका कर्म है इस जिंदगी में, उसको दोबारा आप आएंगे. हो सकता आप सांप बन गया, हो सकता आप तंबूरी बन गया, हो सकता आप कीड़ा बन गया, हो सकता आप पत्थर बन गया. Till your karma rises to a level that you can have unity with the Maker. But you and I, we have one shot. एक कोई नहीं है कि बहू पैडा ने खा ला या टिंडी खा ला. It's up to you. There is no second inning, bodily second inning. There is no body second inning. Clear, madam? Now, sometimes when I am being disingenuous or irritable, we find that there is certain imagery of heavens in the Quran. I consider it allegorical. मेरा ख्याल है समझाने के लिए, और मेटाफोरिकल. दूध दिया नहरा होगी, शहद दिया नहरा होगी, शेड होएगा,
ये कुरान नॉर्थ पोल ही कहता है छेड़नी धुप चाहिए है 6 महीने से धुप निकलती बद्दू जो है ना ਉਹਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿੰਗ ਰਿੰਗ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹ ਜੋ ਡੇਗਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੀ ਮੈਟਾਫੋਰਿਕਲ ਇਮੇਜ ਟੂ ਹਿਮ ਇਜ਼ सिर्फ ख्वाहिश करनी गाँव मिलेंगे हे मिलेंगे गिलमान भी मिलेंगे बहू हौसला रख और हूरें भी मिलेंगी वो एक थी ना सुसाइड बॉम्बर उन्हें धमाका किया ढिड फट गया लेकिन वो जिंदा रहा फिर उन्हें होश आया फिर उन्हें देखा एक नर्स खड़ी कहना बाकी 71 कितने और मनु ने 72 का वादा जी तो एक ही आ गई वो भी बुजुर्ग जी आ गई विल इरादा और डिसीजन हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे तो कौन दिल दिए जाना सीधी नहीं पढ़ सकते वी नो ईच अदर बाय आवर कॉन्डक्ट व्हाट इज कैरेक्टर कैरेक्टर इज योर कॉन्डक्ट इंस्टिंक्ट हैबिट इमोशन when it leads to action verbal or physical or non-action that is your character. What is cowardice? Buzdili. What is bravery? Daleri. What is courage? Reckless bravery nahi hota courage. There is a time to stand up. There is a time to say, okay, I'll deal with this later. So you have to distinguish in life between reckless bravery, cowardice, and courage. क्यों मौलाना मैं कोई झूठ बोलिया मैं कोई कुफर तोलिया सो ये याद रखिए कि हम एक दूसरे को ये भी मैं आखिर तक पहुंचे हौसला कराऊं अंडे तो नहीं मिले गंदे किसी भाई अंडे मारने तो साफ होने चाहिए और कोशिश करो कि मैं कैच कर ला ताकि कल जाके उबाल ला ये तय है माय चिल्ड्रन एंड माय ब्रदर बहुत लाड आदमी मैं दिलों कह रहा खुदा दी यार मेरी कोई गल मानता ही नहीं ये तय हो गया कि हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते किस वक्त पैदा नहीं कहाँ पैदा होना माँ प्यो लड़ते ने कि नहीं प्यो कोई ब्याह तो ब्याह करी आ रहा कि प्यार करने है माठा है But now you are all born and you are all grown up. And this time, you are allowed to speak. What is the purpose of your life? And sit back. वकील साहब, समझो मैं काजी फैजी साहब. What is your purpose of life? In life. Purpose of life in? अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है अपनी जिंदगी तेरा की पर क्यों तुम पैदा होए और की करना चाहते डाका मारन पे लाओ बताएं इश्क शायद देखिए आप सोचते हैं आप सब भी सोचते हैं I'm going to go to all of you अंडरस्टैंड पैसा की नज्म है वो लोग बहुत खुशकिस्मत
वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते हैं, या काम से आशिकी करते हैं। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता है और काम से इश्क हुआ। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। दसो जी इश्क करो, जरूर करो, जितने भी खाओ। देखना तेरे कुड़ी के भरा दे लेने किड्डे तरले ने तो उस तो बाद जाने में इश्क करो। इट्स गुड, इश्क इज अ वंडरफुल थिंग। Ishq means sacrifice. It means to live for somebody else. It means to do good. इश्क करन इस वक्त तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ये है कि अपनी फील्ड में जो अपनी हद तक में बेहतर कर सका लिटिगेंट्स के लिए। Therefore, it's a very reasonable answer कि जो आपने प्रोफेशन चूज किया अपने लिए, मेरी एडवाइस है माथा न रहे। There is no place for a mediocrity. You have to accept. और इसके तरीके हैं, है ना कि मेरा नंबर ले ले। मेरा फोन नहीं है बेटा, लोग तो फोन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मैं when I talk to my children who are on, मेरी बड़ी बेटी जो है वो LLM, सबसे बड़ी बेटी तो हार्वर्ड से किया। मेरे बेटे ने फ्रॉम माय फर्स्ट मैरिज उसने बर्कले से LLM किया। मेरी जो हमारी नूर फातिमा है उसने LLM इंग्लिस्तान से किया। जो दूसरी है वो 11 जैनब, उसको 11 साल की थी। मैंने ऐसे कहा बेटा व्हाट डू यू वांट टू डू? आई वांट टू गेट मैरिड। और मैं कहा व्हाट डू यू वांट टू डू? और बेटा जो है वो बैरिस्ट्री करके आया और LLM करके आया। मैंने उसे अपने दफ्तर में नहीं रखा, I've thrown him away। मैं कहा तू खराब हो गया मेरे साथ। वो मेरे दो हैं स्टूडेंट्स हैं, अहमद हसन और उसकी बीवी है राहत कुनैन। वो दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं, यू नो, दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं आई हेल्प देम। वो चलिए 10 मिनट तो उसके पास भेजे। मैं गया 10 बजे हो गए, 6 बजे तो पहले वापस ना आ। जब तक तुम गोडा बन के हड्डी पे नहीं बैठना आएगा तुसी वकील नहीं बन सकते। कोई नो शॉर्टकट। जी बेटिया बड़ी मजमून बैठी है, मालूम नहीं आया तुझे हूं तो बेटा कुटी शुरू कर देती है। व्हाट यू थिंक इज योर पर्पस इन लाइफ और शुड बी? कोई पर्पस नहीं, अभी फाइंड आउट करें हैं, लेकिन अपनी बेस्ट सेल्फ को सो पढ़ाई है, पढ़ाई फिर पढ़ाई तो नहीं, लेकिन चलो फाइन आउट कर ले आगे फिर मतलब अपनी बेस्ट सेल्फ के साथ जीना जी, मतलब अपने साथ अपनी बेस्ट सेल्फ के साथ जीना, ये पर्पस है। अपने बेस्ट ऑफ माई सेल्फ, टू एक्सप्लोर बेस्ट ऑफ माई सेल्फ एंड लिव विद इट। ठीक है, शादी नहीं करना चाहते खुदा की कसम बेटा बड़ा जब फैसला, खुराटों से बच जाओगे, बदबू से बच जाओगे, उसकी बेहूदगी से बच जाओगे, अद्धा तो पौना बिस्तर में ले जाएगा। हाँ सहना किसी ना आपसे नहीं पूछ रहा, आप बेटी फिर क्या जी? उसके अलावा हेल्थ और अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक को बेहतर करना। ओके, हाउ डू यू डू द लास्ट? सर मैं कुरान पाक तफसीर को अरबिक ट्रांसलेशन को पढ़ी, तालीम कुरान का कोर्स करेंगे 3 साल का। गुड गुड। तो अरबिक के वर्ड के रूप पर अल्लाह ताला ने एक वर्ड वहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया है, इसकी क्या मतलब है और क्यों किया, Good. तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बेटी, I do recommend to you, when I recommend something, इसका ये मतलब नहीं होता कि जो लिखा गया है उसको आप ऐसे समझ लेंगे। हाँ, आप अल्लामा गुलाम अहमद परवेज भी पढ़े। वो कहता है कुरान एक ऐसी किताब है जिसका तर्जुमा नहीं हो सकता, सिर्फ मफहूम बयान हो सकता है। उन्होंने लिखी है, मफहूमुल कुरान भी लिखी है, लुगतुल कुरान 4 वॉल्यूम्स में है, डिक्शनरी ऑफ कुरान, और भी लिखे मैं आजकल पढ़ रहा हूँ आदम और इब्लीस, वो भी है, रोटी का मसला बिल्कुल है, बिल्कुल है, बड़ी बड़ी। यू नो ही रोट 88,000 बुक पेजेस, 88,000। He has only 1 book in English,
क्या टाइटल है उसका? तो सर याद Islam is challenge to religion. That's the most lucid explanation why we call it deen. Nobody else is given. अच्छा जी, हो गया, समझ गया, करें यार। गुलाम अहमद परवेज, उनके फॉलोअर्स को परवेजी कहते हैं। रीजन जरूरी नहीं है कि जो किसी ने लिखा है ना, एब्जॉर्ब इट, थिंक अबाउट इट। जी मेरी थी पर्पस ऑफ लाइफ, योर पर्पस ऑफ लिविंग। मुझे लगता है कि मतलब गोल्स तो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन पर्पस ये फुटबॉल खेल गोल्स के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। बता ना, पर्पस we can have, देखो बेटी, we can have primary purpose, we can have secondary purposes, we can have distant purposes. What is your primary purpose? I'm only leading you to knowing yourself. I'm not leading you anywhere else. बल्कि ग्रीक्स कहते थे know thyself and then be thyself. First know yourself. ठीक है मेरी? तो दसो प्राइमरी पर्पस की मेरी थी ना, अच्छा टीचर बनना, और मुझे बच्चों से बहुत ज्यादा बच्चे बहुत पसंद है, तो मे बी a good mother also. I think myself as being a good mother. Good. It's a very noble cause. What sort of a person would you like to get married to? A person who is kind and genuine. And Yeah, we are not labba. फिर मास्टरानी बनी, कलील फिर नहीं। Because बेटा, whenever you use a word, you must always ask yourself its meaning. Right? आपने दो लफ्ज इस्तेमाल किए, काइंड, कि कुतिया में प्यार करता है, मेरा मियाँ बड़ा अच्छा है, तेरा कुत्ता मैंने प्यार करता है, मिठू किधर जा रहे हैं। Kind, to be kind has connotations. In life, perhaps we should have empathy, sympathy for the oppressed, and be gracious to them. दूसरा तरीका genuine, कि उन्हें पॉलिश करके देखिए कि ये रंग ठीक है कि नहीं है, ये नाखून में मैल लगी है कि नहीं, ये नाखून काटता कि नहीं, नाक तो नहीं खोलता सारा में साथ। All right, how do you determine that a person is genuine or not? And what do you understand? Look, Betty, please rest assured, we all play roles in life. That role is given to us by our culture, by our language, by the religion, and by our social status. We play that role. Right? मैं आपके रख गया, अजी बड़ी ताबेदार है जी, वो बड़ी जी, वो गुम बोलती नहीं जी. You play a role. We all play roles. It is not that we wear masks. Sometimes the role becomes you. One of my very dear friend, अभी हाल ही में जवानी में फौत हुए हैं, 94 साल की उम्र में, ज़िया मोहुद्दीन, he never took his mask off. He was always the actor. Because he acted so much in life. So you could not peel it off. How can you peel people off? Now let me share it with you. Let me share it. Sir, कितने लिख सकते हैं? इधर ही. जो नो मैं आपके कोट तो साफ का छह. नहीं. बेटा आप क्यों हंस रही हैं? मैं आपको मस्खरा. आपको सलाम करते हैं. चल रहा है? जी नहीं चल रहा. एक मेरे में नहीं जा रहे. ये देखिए.
हाँ हाँ वैसे आई एक तो पिछले नहीं मिला मैं सर्दी जम गए ये सबसे ज्यादा चल रहा है ये नहीं वो मैं नाल ले जाऊंगा Now I want you all to absorb this carefully. Carefully. This is called Johari's window. ठीक है मैंने थी तुसी बहुत कूल रहे हो मैं तो फजूल गल कर रहा हूं Let's put in the first frame. आप समझे पहले फ्रेम में मैं हूं या आप हैं जो आप अपने आप को जानते हैं What you say about yourself, think about yourself, believe about yourself, right or wrong. मतलब ये envy, मैं envy. I know my name, identity. मैं कहा गया मैं सैयद हूं, whatever that means. I have 5 children. I am a lawyer. I teach also. I have a sense of humor. I believe I am intelligent. I have communication skills. ठीक? I love my children. I adore my wife. मुझसे 24.5 साल छोटी है कभी तो मुझे बेटा कहते कहती निकाह टूट जाएगा मैं क्या लिख के दे दूं Now you have to make the first frame about yourself. Right or wrong? Right or wrong? आशा कित है आगे मैं पतला हूं लेकिन मेरे अंदर बड़ा हुस्न है जो मर्जी कहना मैं से कोई बोल नहीं मैं से कोई बोल नहीं This is an exercise you have to do in your houses yourself. The second is they. आपके बारे में और कौन क्या कहता है जिसका आपको पता है What is said behind your back which you know वो भी पता चल जाता है वो भी पता है बताने वाले होते ठीक हो गया and what you say about them which they know that is transformation of information. Right or wrong? The truth is not the issue here. मतलब तो आनंद को क्या है आनंद को कुड़ी बड़ी उम्र की तो बहुत बड़ी है आप पतले बड़े लगते हैं वो झूठा है ना वो तो आके यकीन करना अच्छा लगेगा सर Let's go to the third frame. आपके बारे में जो वो कहते हैं जिसका आपको इल्म नहीं है This is very important for politicians. The result is the election. This is very important for stars. Film dabba ho gayi. What is dabba film? They have not liked it. ठीक है भाई हाँ जी क्लियर जी ना कहते हैं Prophets don't have a third frame. They know everything that is said to them. अगर डायरेक्टली पता लगता है तो वही आ जाती है वही is a direct communication from the entity which is energy that आपको पता है सूर्य मकबूल बहादुर कहते हैं कि मेरे दिल पे इस तरह पड़ती
और वो चादर लेने पसीनों पसीन हो जाते सन। एम आई राइट बाबू? यही पढ़े है ना सी? ठीक है। सो ए लाइफ वेल स्पेंट इज, इसमें कम से कम इंफॉर्मेशन, क्लियर जी? कोशिश कम से कम चलो ना। क्लियर हो गया जी? नाउ लेट्स से यू, what you are capable of, which neither you know nor they know. It may come up sometimes in life. Let me give you an example. Give you an example. ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕੋਈ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਨੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ। ਉਹ ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ। ਆਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ। The part of you that comes out in stress. जवान फौजी काते 6 फुट 4 इंच, बड़ी मशहूरी है, ताकत है, 2 गोले मारने तो जीप थले मेरे पास is actually green. Entitled to be यहाँ वो है कि वो दीवारे वाला प्यो को बड़ा अफसर है, वो कहना मैं बीमार हूँ, वो अस्पताल दाखिल हो। और जी बड़ा सखी है, बड़ा अर्थ है। It all depends when you are confronted. Purpose of life. मैं अनफॉर्चुनेटली और आगे कि नहीं मार रहे आप कौन में खड़ा गया जी बेटे मैं ढूंढ रहा हूँ पिछले कोई 2-3 साल से मुझे ढूंढना चाहिए, तलाश कर रहा हूँ सर। पर्पस को नहीं कितने तलाश कर रहे हो कि कितने सरकार के सोची पे रहे हो, वो कहना मैं सोच घूमा। अच्छा चल दसो। मैं मतलब यही इवैल्यूएट करना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो इसको निकाल। मैंने जितने भी डिसीजन लाइफ में लिए वो बाई चॉइस नहीं थे, मेरे पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई मैंने ग्रैब कर ली। मैं मतलब वकील या अपने फील्ड में भी अपनी चॉइस से नहीं गया, मुझे लगा कि यार काम क्या करते, पैसे क्यों कमाते पैसे ठीक नहीं किस तरह के। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ नेक्टा, नेशनल काउंटर टैक्स नेशनल काउंटर अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਕਰਨਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਆਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਰਹੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਕਰਾ all right तो वो ढूंढ रहा हूँ। let me give you I'll give you the There's something that I again can't speak in front of everyone. क्यों नहीं क्या मैंने तो कोई मैंने तो आई कोई भाई यार केड़ी मर्जी कर बिल्कुल तो क्या इसमें तो ठीक है हमने आ गई there's also an underwear purposely ढूंढ रहा हूँ सर उसमें मैं जो चीज आगे सुनाने में जो सवाल पूछना था वो मैं कैसे आप मैं मैं फैज साहब की जबान में क्योंकि मेरा एक सवाल और मैं अभी आ जाएगा, मैं अभी था फैज साहब की लंबी नज़र है। लेट मी स्टार्ट। किसी को कुछ भी खबर, पाकिस्तान क्यों बने, किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि दिन ढले किधर को जाने का रुख किया।
पाकिस्तान तो बन गया, हूं करना की है? किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि दिन ढले शहर से निकलकर किधर को जाने का रुख, न कोई ज्यादा न कोई मंजिल, किसी मुसाफिर को अब दिमाग सफर नहीं है। ये वक्त जंजीर रोज शब की कहीं से टूटी हुई कड़ी है, ये मातम में वक्त की घड़ी है। ये वक्त आए तो बेइरादा कभी कभी मैं भी देखता हूं उतार कर जात का लिबादा, कहीं स्याही मलामतों की, कहीं पे गुल बूटे उल्फतों की, कहीं लकीरों पे आंसुओं लगी लकीरें आंसुएं, कहीं पे खूने जिगर के धब्बे। ये चाक है पंजाए उदू का, ये मोहर है यार मेहरबान की, ये लाल लब है मैं विशां के, ये मरहमत शेख बदजबान की। ये जामा है रोज गजीदा मुझे, ये पैरहन दरीदा अजीज भी नापसंद भी है। कभी ये इसरार हद नहीं, कभी ये जोश है, कभी ये जोश वहशत, कभी ये जोश वहशत कि इसको तोड़ दो पर वो पाकिस्तान। कभी ये इसरार हरफ उल्फत के चूम कर फिर गले लगा लो। तो अगर पाकिस्तान में नहीं पर्पस समझ आया तो नांडे पुस्तक तान नहीं आया लकेड़ी की आमद आ रही है। क्या बात, आप बताइए। लुक फॉर जी मेरे सर मैं पीसफुल बिहेवियर्स और पीसफुल कम्युनिकेशन जो है वो सीखना और सिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है यार। एक साड़ी पार्टी सी चपरास पार्टी की ना बनाई सी, वो बेलशा पार्टी जड़ी है। अच्छा मैथमेटिशियन है, मैं नाम भूल गया। अलामा मशरकी, अच्छा नहीं मशरकी, सॉरी अलामा मशरकी ना, तुसी चपरास में बन जाओ। गुड आइडिया। To be peaceful is very nice. For example, I hate unpleasantness. I dislike unpleasantness. ये मुंह मारी ये गाते ना। जी मेरी बेटी आप बताइए। तो बेसिकली जो करियर डेवलपमेंट में वो जो लीडरशिप की तरफ जाने का और दुनिया के साथ जितना ज्यादा इम्पैक्ट रह सके, एम्पैथी जो है वो पार्ट ऑफ आई एम INFJ पर्सनालिटी, तो मेरा इंटरेस्ट एम्पैथी की तरफ ज्यादा रहता है। किसकी तरफ? एम्पैथी की तरफ, क्योंकि सर एम्पैथी। अच्छा ठीक है, मैं कल 5-7 कोड़े मिला देना तो जी एम्पैथी करो, क्योंकि वो कोड जो है लेप्रेसी जो है ना, इट्स नॉट ए डिजीज जो ट्रांसमिट होती है हाथ लगाने से। ये तो इधर पतले सर मुझे तो जिंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आया बहुत कोशिश के बावजूद, तो टारगेट मैंने अब ये रखा है कि खुश रहूँ और लोगों को भी खुश रखूँ, बस क्या मैं सर्कस लकीर नानी सर्कस सर ये पूरा मुल्क ही सर्कस है। जी आप सर आई एम स्टिल लुकिंग फॉर कि पर्पस के लिए, लेकिन मेरा जो भी रिसेंटली इंटरेस्ट मतलब जो हो रहा है, मैं ब्लास्फेमी लॉज पे काम करना चाह रहा हूँ कि मतलब पाकिस्तान में कैसे यूज या एक्सप्लॉइट होता है, हमारा माशरा कैसे अभी भी टाइम है ना। माई रीडिंग इस इतनी बेटी जिस बेटी बेगहराई से पढ़ रही है, इतनी तो शायद ना पढ़ी हो। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान शरीफ में कि इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा, है कि नहीं? है। Why are we so perturbed about blasphemy? देखो ना, people are divided into 3 categories. One is called believers, one are called atheists, one are called agnostics. They are sitting on the fence. We can't make up our mind. We can't make up our mind. But to have beliefs, from the way I look at life, or like from my little reading that I have done, liberalism is a belief, is a faith. Communism is a faith. Socialism is a faith. You can have Buddhism is a faith. Hinduism, we may make fun of them. We can do that. दुल्हन मेरी बहुत खफा होती हैं। मैं एक दफा
टीवी देख रहा था कोई इंसान, तो टोटम पोल्स दिखा रहे थे रेड इंडियंस के, रेन डांस कर रहे थे। तो मैंने कहा दुल्हन ने इसमें और जो हम हजरत अब्बास का अलम निकालते हैं उसमें क्या फर्क है? शादी अगर दोबारा बात की तो मैं आपसे बोलना छोड़ दूंगी। मैं कहा ये भी आप वादा तोड़ देंगी, लेकिन मेरी जरूरत नहीं पे। All I want to tell you is that there are many things common between faiths. मतलब मैंने इस्लामाबाद में लोगों को चादर उठा के पैदल चलते थे बड़ी मान जाने के लिए, नंगे पाँव। ठीक है। और मैंने ये भी देखा हुआ कि वो जो हम करते हैं, जो पिटमैन करते हैं, पिटमैन समझ रहे हैं? जेड़े पिटमैन, उन्होंने पिटमैन नहीं पता था मुझे। हम पंगूड़ा नहीं निकालते, हम ताजिया नहीं निकालते, हम अलम नहीं निकालते, हम सुलझना नहीं निकालते। These are all symbols. It's not that. जो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ किताब गुलाम परवेज की, वो कल रात को जो मैं पढ़ा, उससे कहा जो मर गया है, he can do nothing for you. I can. और ये सर तसव्वुफ की होती है तो नहीं पढ़ रहे उसमें उन्होंने बैसों में चढ़ा हुआ। हम कब्र परस्त, पीर परस्त और तो हम परस्त लोग हैं। वो मेरी जूती दे जूती चढ़ी सफर आने वाला है। और यार काली ओ जी मरीख जेड़ा ना, ओ जुपिटर दे टेंडू पे बैठा है, ए महीना था वैसे बहुत अच्छे। We read the horoscope every day. We are so stupid that we think कि वो कर, and we want to believe it. वो जी नजूमी ने मन किया। मैं एक दिन यूनाइटेड बेकरी से निकल रहा था, एक बंदा आया, कहता जी मैं तुम पछाण गया। मैं कहा अच्छा, मन तुहाडा हाथ विखाओ तुसी, मैं तुहाडे बारे च कुछ दसांगा। मैं कहा मैं तो मर्सिडीज बेंज से बैठा है, तू साइकिल चला रहे हैं, तू अपना हाथ दे। Why do we do this? कॉफी, मैंने परवेज मुशर्रफ साहब के साथ बैठे हुए देखा कि एक कॉफी रीडर आई, कॉफी का गाना है, और सदर मुमलिकत देख रहे, सुन रहे, वो कि वैसे ही 100 ग्रेट पर्सनैलिटीज में रसूल मकबूल का नाम नंबर 1 है, नंबर 2 कौन है? आपसे पूछ रहा हूं। आइजैक न्यूटन, नॉट जीसस, आइजैक न्यूटन। सो वी कैन क्या 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 बात क्या कर रहे थे, मैंने आपको इंटरप्ट किया। ब्लास्फेमी के इशू का बात है। So sometimes यानी हलवा लिखे है, प्रिंट हो गया है सऊदी अरेबिया तो फिर नया बात था, हम मारने लगे से। यानी हमारी जहालत और जाहिलियत का कोई है ही नहीं, देयर इज नो लिमिट टू इट। मेरी ग्रीवेंस, बेटी आपसे कह रहा हूं, मेरी ग्रीवेंस ये है, हम में मजहबियत, रिलीजियोसिटी बहुत ज्यादा आ गई है, स्पिरिचुअलिटी हमें भूल गए। द की ऑफ फेथ इज स्पिरिचुअलिटी। सर ये हमारे इस्लाम में मसाला ज्यादा डाल दिया उन्होंने, मसाले ज्यादा डाल दिए इस्लाम में ना, कुछ हमलावर जन्नत से आगे चला गया। अच्छा उते की लग रहे खुश रहे। मैं आपको वो एक अरेबिक था बंदा, वो कहता कि यार इस्लाम ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਵਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। बिल्कुल ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ अल्लाह की कसम है, ऐसी सोने ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਲਾਮ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮਰਾਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਰੌਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ लगा, ਉਹਨੂੰ आ के जितना मिले ਉਹਨੇ कहा यल्ला यल्ला मक्का, अगर आप जाली को हाथ लगाए मक्का। वो बाहर निकला, कहना सोने में मर जाऊँ तेरे पीछे, केड़े प्यारे पैदा हो गए। क्या बोले मेरे Purpose. लाइफ का पर्पस ये है कि टू मेक डिफरेंस इन माय लाइफ एंड इन अदर्स एज वेल। अरे तो it's very easy to say
to make a difference. But always when you say, make a sentence, one of the purposes of my life is to make a difference. The question that must arise after the sentence is, how? So how, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तब मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फैसला किया था कि आई मस्ट बी हैप्पी इन माई लाइफ. तो जब कंप्लीट हो गई और सारा, तो उस टाइम जो है मुझे था कि कौन सी चीज़ें जिनमें मैं खुश रहती हूँ ना, तो वो था सोशल वर्क. ठीक है, आई स्टार्टेड लर्निंग पीस एजुकेशन, पीस बिल्डिंग और वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में आई वॉज टू मच इन्वॉल्व. देन फिर प्रोफेशनली भी ज़ाहिर पैसे भी कमाने होते हैं, थोड़ा बहुत दुनियावी भी करना होता है. तो देन आई एंड अप वर्किंग विद एन NGO सेक्टर. तो अब यहाँ पर जो है मुझे बहुत मौका मिला कि मैं ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर सकूँ या ज़्यादा लोगों की लाइफ्स में डिफरेंसेस क्रिएट कर सकूँ. तो आई वर्क लाइक फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, और उसमें 24 वेंचर्स को इनिशिएट किया, फंड भी किया. और उसके बाद अभी जो मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है वो है TFGB, टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस. तो हमारी सोसाइटी में ऑनलाइन हरासमेंट होती है, साइबर बुलिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है चीज़. तो इसके ऊपर लॉ मेकिंग भी है, आप लोग बेहतर जानते हैं, पीका 2016 का लॉ है. और लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर मसाइल हैं और बड़े उस पर हम काम कर रहे हैं. तो ये I have one question for you. Help me. I'm seeking help. You use the word happy. खुश. What do you think is happiness? सर मुझे वैसे तो होता है कि बड़ी मटेरियलिस्टिक सी चीजें होती हैं कि यार ना कोई नहीं, बिल्कुल नहीं. अच्छा सर, हाँ, देखो सुनो मेरी हालत भी देखो. You cannot be cultured in poverty unless you make poverty your culture. दाता साहब बन जाओ, बुल्ले शाह बन जाओ, then money is a non-issue. जी जी. वो अयातुल्लाह ख़ुमैनी कहते हैं, एक जुब्बा हो तो दूसरे की ख्वाहिश करना. अच्छा सर, तो एक तो मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं समहाउ, लेकिन मुझे उसके साथ भी जो है मुझे ऐसा होता है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो वो मुझे खुशी देता है. क्या देती है? क्या किसी करती के है? लिए कुछ करते हैं ना तो वो हमें खुशी देते हैं. वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो आपको किसी को मॉनेटरी हेल्प भी कर सकते हैं, वो आप किसी की Even a kind word, बेटा. Even a kind, it could be a Even small a kind thing, word. and it could be a dedicated effort to do something. Very Okay, I'll tell you what I do, just to share with you what I do. On Eid day, I will take one of my children. I have 3 now. एक की तो शादी हो गई, वो चली गई अपने. I'll take either Zainab or Abbas. We go to the general ward. I don't go there because people recognize me. And I tell him, we have X amount of money. Go to a bed where the patient is lying alone. Give him Eid Mubarak and give him 1,000 rupees. Right? Hey, Baba बोल रहा है, it doesn't matter. And he says, क्यों दे रहे हो? क्योंकि अल्लाह का हुक्म. And I find that now that it's becoming a habit, I even distribute on Eid day. अगर कोई ना मुझे ना खफा हो जाता है सुबह, I see a policeman on the road, 3 policemen, I'll stop by, give them 1,000 rupees each, and say, Eid Mubarak. Eid Mubarak जी आपको. So I agree with you that sharing and giving is an essential ingredient of human happiness. I have no doubt about that. I work for rich people. I have never seen so much misery as in the very rich. Because please remember, beta, there is a certain thing we call in life needs, zaruriyat. And then there are wants, ख्वाहिशात. जो हम मिडिल क्लास हैं, मैं और ये हैं, हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो हमारी नीड्स बन जाती. यानी मैं अब 2 बच्चे हैं ना हमारे घर में, मैं ये क्या के फावा हो गया कि जब आप कमरे में ना हो तो AC हीटर पे नहीं चलना चाहिए
और बत्ती एक चलनी चाहिए. But they do. When I tell them that I started life on a cycle, बाबा मजाक कर रहे हैं. मैं क्या, मैं बसा दे जाना रहा हूं. मैं एस एम गफर साहब का जब जूनियर था, मैं बस पे जाया करता था. I would walk to the government college, walk to the law college. So the order. But giving is a reason. जी बेटा, आप उछल रहे थे जो आप अकेले में बात, जिद की बात करने थे और क्या थोड़ा